फॉर्म 26A एक प्रकार का टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी ओर से चुकाए गए टैक्स की पूरी डिटेल होती है। इनकम टैक्स टीडीएस का पूरा विवरण होता है। यह आपके पैन नंबर से लिंक होता है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके इस फॉर्म को देखा जा सकता है। लॉगिन करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26AS पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह एनुअल टैक्स स्टेटमेंट होती है, जो कि इनकम टैक्स रूल्स 1962 के सेक्शन 203AA के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है। इसको ट्रेसिस का नाम भी दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। जितनी भी कंपनीज या फर्म ने एसएससी का टीडीएस काटा है, उन सभी का इसमें विवरण होता है। कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 26AS। फॉर्म 26 के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? पार्ट ए, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नंबर 1, पैन नंबर ऑफ एसएससी। नंबर 2, नेम ऑफ एसएससी। नंबर 3, एड्रेस ऑफ एसएससी। नंबर 4, करंट स्टेटस ऑफ पैन, एक्टिव और नॉन एक्टिव। नंबर 5, फाइनेंशियल ईयर। नंबर 6, असेसमेंट ईयर। नंबर 7, नेम ऑफ डिडक्टर। नंबर 8, under which section deductor deducted the TDS. Number 9, transaction date, bill booking date, related month. Number 10, status of booking. Number 11, date of actual bill booking in records. Number 12, 10 number of deductor. Number 13, amount paid or credited bill amount. Number 14, tax deducted of SSE serial wise. Number 15, TDS deposited. Number 16, total amount paid or credited. Number 17, total tax deducted. Number 18, total tax deposited. Number 19, detail of TDS on sale of immovable property under section 194IA for seller of property. Part B, details of tax collected at source, means TCS. Part C, detail of tax paid other than TDS or TCS. Tax paid by the SSE in a financial year. The main contents of Part C, इसमें मुख्यतः निम्न जानकारी देनी होती है। मेजर हेड, माइनर हेड, टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट,
challan serial number and remark. Part D, detail of refund paid. Number 1, assessment year. Number 2, mode of payment. Number 3, amount refund. Number 4, interest paid. And number 5, date of payment. Part E, detail of AIR transaction. AIR means annual information return. This section will be uploaded after filing AIR. Due date of filing AIR is 31st August of every year. Note: AIR disclose high value of financial transactions carried out by SSE during the financial year, and these transactions are required to be furnished under section 285 BA of the Income Tax Act 1961. हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? नंबर 1, कैश डिपॉजिट 10 lakh rupees or more in a year in a saving account. Credit card payment in a year equal or more than 2 lakh. Receipt of equal or greater than 2 lakh in bank account in a financial year by a person. If you acquire bonds or debentures issued by a company equal or greater than 5 lakh rupees. If you purchase shares of a company equal or greater than 1 lakh in a financial year. Number 6, sale or purchase immovable property valued at 30 lakh rupees or more. Number 7, received 5 lakh or more than 5 lakh rupees bonds issued by RBI यानी Reserve Bank of India. Part F, details of tax deducted at source on sale of immovable property under section 194 IA for buyer of property. Part G, TDS default. It includes financial year, short payment, short deduction, interest on TDS payment default, interest on TDS deduction default, late filing fee under section 234E, interest under section 222, and total defaults.